Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Soban from Department of MLT Cast. Today my presentation topic is hepatitis virus. The cause of hepatitis are varied and include viruses, bacteria and protozoa as well as drugs and toxins, for example isoniazid, carbon tetrachloride and ethanol. The clinical symptom of course of acute viral hepatitis can be similar regardless of etiology, and determination of a specific cause depend primarily on the use of laboratory test. हेपेटाइटिस के मेन वजूहत में से वायरसेस है, बैक्टीरिया है और कुछ प्रोटोजोआ है, और इसके साथ साथ ड्रग्स भी है और टॉक्सिन्स जैसे कि आइसोनाइजाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड और इथेनॉल. Hepatitis viruses may be caused by at least 5 different viruses. Hepatitis viruses तकरीबन 5 मुख्तलिफ वायरसेस से काज होती है. Non-A non-B hepatitis is term previously used to identify cases of hepatitis not due to hepatitis A or B. With the discovery of hepatitis viruses C, E, and G, virtually all the viral etiologies of non-A, non-B diseases can be specifically identified. Other viruses such as Epstein-Barr virus and cytomegalovirus can also cause inflammation of the liver, but hepatitis is not the primary disease caused by them. Hepatitis A virus is an uninvolved single-strand RNA with cubic symmetry. Hepatitis A virus क्या है? Hepatitis A virus uninvolved है, single-stranded RNA virus है और इसकी symmetry cubic है. Hepatitis A virus is classified in a separate genus hepatovirus of picornaviruses. Hepatitis A virus separate genus है hepatovirus और इसकी family है picornavirus. हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस इज स्प्रेड बाय फीकल ओरल रूट एंड आउटब्रेक में बी एसोसिएटेड विद कंटेमिनेटेड फूड और वाटर. हेपेटाइटिस ए वायरस फीकल ओरल रूट के ज़रिए या कंटेमिनेटेड फूड और या जो हम पानी पीते हैं या कंटेमिनेटेड या ऐसे खुराक जो वायरसेस से जो जिसमें वायरसेस मौजूद होते हैं. पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी हेपेटाइटिस वायरस बीमारियां कैसे काज करता है? द वायरस इज बिलीव टू रिप्लिकेट इनिशियली इन द एंटेरिक म्यूकोसा. ये एंटेरिक म्यूकोसा ये जो हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोसा है इसमें रिप्लिकेट होता है. मल्टीप्लिकेशन इन द इंटेस्टाइन इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ वायरीमिया विच स्प्रेड टू द लेवर. मल्टीप्लिकेशन इसकी इंटेस्टाइन में होती है जो कि वायरीमिया इसको फॉलो अप करती है. वायरीमिया वो कंडीशन होती है जब वायरस ब्लड में दाखिल होता है और ब्लड में वो लीवर यानी जिगर को भी पहुंच जाता है, जिगर तक पहुंच जाता है. The response to replication in the liver consists of lymphoid cell infiltration, necrosis of liver, इसमें liver की necrosis होती है, parenchymal hepatocyte cells and प्रोलिफरेशन ऑफ कॉपर सेल जो कि ये कुछ हमारे लिवर की कुछ सेल्स है इसमें भी पहुंच जाती है. इन सेल्स की नेक्रोसिस हो जाती है. The extent of necrosis often coincide with the severity of diseases. It can be demonstrated in feces for 10 to 14 days before onset of disease. In most patients with symptom of diseases, virus is no longer found in specimen. Contagion is greatest 10 to 14 days before symptom appear. In hepatitis A virus infection, an incubation period of 10 to 15 days is usually followed by the onset of fever. हेपेटाइटिस ए वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 10 से लेकर 50 दिन तक है जो कि इस फिर इसको बुखार भी बंद हो जाता है. एनोरेक्सिया यानी पुअर एपिटाइट यानी लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख खाना ना लगना, नाजिया वोमिटिंग आना, पेन एंड राइट अपर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट. जो हमारे 4 एब्डोमिनल क्वाड्रेंट है इसमें राइट अपर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में दर्द भी होता है. एंड विद सेवरल डेज जॉइंटस में कुछ दिन जॉइंटस भी रहता है.
द लेवर इज़ एनलार्ज एंड टेंडर, इसमें लेवर जो है वो एनलार्ज हो जाता है, जिसको हेपेटोमेगेली कहते हैं। एंड सीरम अमीनो ट्रांसफरेज एंड बिलिरुबिन, जो कि ये लेवर की कुछ एंजाइम है अमीनो ट्रांसफरेज, और बिलिरुबिन के लेवल भी एलिवेटेड बढ़ जाता है एज रिजल्ट ऑफ हेपेटिक इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज, जो कि हेपेटिक इन्फ्लेमेशन काज करती है, और लेवर इसमें ख़राब भी हो जाता है, यानी डैमेज हो जाता है। रिकवरी अकर्स इन अ डे टू वीक, इसमें रिकवरी जो होती है वो कुछ दिन से लेकर हफ्तों तक हो जाती है। अब इसमें इसकी लैब डायग्नोसिस क्या है? एंटीबॉडीज़ टू हेपेटाइटिस ए वायरस कैन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग अर्ली इलनेस। हेपेटाइटिस ए वायरस की जो एंटीबॉडीज़ है वो पिछले एंटीबॉडीज़ टू हेपेटाइटिस ए वायरस कैन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग अर्ली इलनेस, पहले पहल जब बंदा बीमार होता है तो इसमें एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। एंड मोस्ट पेशेंट विद सिम्टम और साइन ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस ए ऑलरेडी हैव डिटेक्टेबल एंटीजन इन द सीरम, और कुछ पेशेंट जिसमें हेपेटाइटिस ए वायरस के अलामात होते हैं, उसमें पहले ही से इसकी सीरम में पहले ही से वायरस के हेपेटाइटिस ए वायरस की एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। अर्ली एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेज आर प्रीडोमिनेटली आईजीएम, पहली जो एंटीबॉडी शो होती है सीरम में वो आईजीएम है, विच कैन बी डिटेक्टेड फॉर सेवरल वीक और मंथ, जो कि कुछ वीक से महीनों में हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में। ड्यूरिंग कन्वोलसेंस एंटीबॉडी ऑफ आईजीजी क्लास प्रीडोमिनेंट्स, और इसके बाद आईजीजी भी आ जाती है। और ये कुछ चार्ट है आईजीएम एंटी एचएवी, आईजीजी एंटी एचएवी एक्यूट इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होता है तो इसमें आईजीएम पॉजिटिव आता है और आईजीजी नेगेटिव आता है। फिर जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है यानी ओल्ड इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें यानी जब इन्फेक्शन जो है ना वो ख़त्म होने लगता है तो इसमें एंटी आईजीएम जो एंटीबॉडी है वो नेगेटिव आती है और आईजीजी पॉजिटिव आती है। इंक्यूबेशन और नो इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो इसमें दोनों आईजीएम और आईजीजी दोनों ही नेगेटिव आती है। अब हेपेटाइटिस बी वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज एन अनइन्वॉल्व्ड डीएनए वायरस बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ हेपेडनाविरिडी। हेपेटाइटिस बी वायरस इन्वॉल्व्ड डीएनए वायरस है और ये फैमिली हेपेडना विरिडी इसकी फैमिली है। द कंप्लीट वायरन इज spherical particle that consist of an envelope around a core. The core comprises of nucleic capsid that contain a DNA genome. ये जो कंप्लीट वायरन है ये स्फीरिकल होता है और ये एक एनवलप पर मुश्तमिल होता है, एनवलप अराउंड अ कोर, इस कोर पर एनवलप होता है। द कोर कंप्राइज ऑफ न्यूक्लिक कैप्सिड, इस कोर जो है ये न्यूक्लिक कैप्सिड पर मुश्तमिल होता है। एंड दैट कंटेन द डीएनए जीनोम, जिसमें डीएनए का जीनोम यानी वायरस का जीनोम होता है। Other components of the core are hepatitis B virus core antigen HBcAg and hepatitis B E antigen, which is low molecular weight glycoprotein. The envelope of virus contains the hepatitis B surface antigen. हेपेटाइटिस बी वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? इट हैज़ become clear that the major mode of transmission is through close personal contact with body fluid of infected individual। ये बात क्लियर है और वाज़ेह है कि जो मेनली जो हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिट होता है एक बंदे से दूसरे बंदे तक, वो बॉडी जो जितनी भी फ्लूइड्स है ये इस पर इन्वॉल्व होती है। HBsAg has been found in most body fluid including saliva, semen and cervical secretion। HBsAg के जो है वो बॉडी में जितनी भी फ्लूइड है जैसे कि सलाइवा हो गया, हमारा सीमन हो गया और सर्वाइकल जो सिक्रेशन है उसमें HBsAg फाउंड यानी पाया जाता है। Under experimental condition as little so 0.0001 milliliter of infection blood has produced infection। कुछ तजुर्बात से ये भी मतलब वो वाज़ेह है कि 0.0001 ml का इन्फेक्शन ब्लड से भी होता है यानी ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिशन इज देयर फॉर पॉसिबल बाई व्हीकल सच इज inadequately sterilized hypodermic needle or instrument used in tattooing and ear piercing।
ट्रांसमिशन में जो हम नीडल्स जो वगैरह ये यूज़ करते हैं इंजेक्शन के लिए, वो भी ट्रांसमिशन में रोल अदा करती है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट यानी टिश्यू और ईयर जो है ना वो पर्सिंग जो करते हैं ईयर में, या टिश्यू बनवाते हैं कुछ लोग अपने बॉडी में, वो भी ट्रांसमिशन एक सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस बी वायरस का। पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब ये हेपेटाइटिस बी वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है, यानी बीमारी कैसे काज करता है। द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ हाईली वेरिएबल। हेपेटाइटिस बी वायरस के क्लिनिकली इसमें बहुत सी वेरिएबल पाए जाते हैं, यानी बहुत मुख्तलिफ है। द इंक्यूबेशन पीरियड में बी एज ब्रीफ एज 7 days और एज लॉन्ग एज 160 days, मीन अप्रॉक्सीमेटली 10 week। हेपेटाइटिस बी वायरस का इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो 7 दिन से लेकर 160 दिन तक हो सकता है, जैसे कि यानी 10 वीक तक। liver injury appears to occur from a cell-mediated immunity system attack on HBV. Viral antigen on the surface of infected hepatocytes are target for cytotoxic T cells. Immune complexes of antibodies and HBsAg can deposit in tissues and activate the immune system, including an arthritis as well as skin and kidney damage. Patients who have immunosuppressed state such as malnutrition, AIDS, and chronic illness are more likely to be asymptomatic carrier because their immune system does not attack. HBV can cause acute and chronic hepatitis. The following are disease states caused by hepatitis B virus: acute hepatitis, uh, phlegm- uh, fulminant hepatitis, severe acute hepatitis with rapid destruction of liver. ये एक्यूट हेपेटाइटिस के में एक किस्म है जिसमें लेवर जो है ना वो रैपिडली डिस्ट्रॉय होता है, यानी तेज़ी के साथ लेवर डिस्ट्रॉय होता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी है, इसमें एसिम्प्टोमेटिक कैरियर द कैरियर पेशेंट नेवर डेवलप एंटीजन अगेंस्ट एच बी एस ए जी एंटी एच बी एस। इसमें पेशेंट में एंटीबॉडीज एच बी एस ए जी के खिलाफ नहीं बनती है एंड हार्बर द वायरस विदाउट लेवर इंजरी। और लेवर जो है ना वो जिगर के इंजरी के अलावा फैल जाता है। दीज आर एन एस्टिमेटेड 200 million carrier there are estimated 200 million carrier of HBV in the world। दुनिया में तकरीबन 200 मिलियन एच बी वी के पेशेंट यानी कैरियर मौजूद है, जो कि लेवर एच बी वी के ट्रांसमिशन में रोल अदा करते हैं। क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस द पेशेंट हैज़ लो ग्रेड स्मोल्डरिंग हेपेटाइटिस। इसमें पेशेंट में लो ग्रेड स्मोल्डरिंग यानी छुपा हुआ हेपेटाइटिस में छुपा हुआ होता है और साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते ऐसे पेशेंट में। Chronic active hepatitis, the patient had an acute hepatitis state that continues without the normal recovery, lasts longer than 6 to 12 months. Acute hepatitis B is usually manifested by the gradual onset of fatigue, loss of appetite, nausea, and pain, and fullness in the right upper abdominal quadrant। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ना ये भी इसमें भी फिटीक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगती, नाजिया इसमें वोमिटिंग आती है, एंड पेन और दर्द होता है, एंड फुलनेस इन दी और राइट अपर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में फुलनेस महसूस होती है। विद इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्लेवर देयर इज इंक्रीजिंग कोलेस्टेसिस एंड हेंस क्ले कलर्ड स्टूल, डार्कनिंग ऑफ यूरिन एंड जॉइंटस। इसमें विद इंक्रीज इन इसमें लेवर ज़्यादा इंक्रीज होता है हेपेटाइटिस बी वायरस में। देयर इज इंक्रीज इन कोलेस्टेसिस, इसमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाती है बॉडी में, एंड हेंस क्ले का स्टूल और जो है ना ये स्टूल कलर क्ले हो जाता है। डार्कनिंग ऑफ यूरिनेशन जो है वो डार्क कलर की हो जाती है, एंड जॉइंटस और जॉइंटस भी होता है इसमें। कम्प्लिकेशन क्या है इसमें? प्राइमरी हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा with chronic infection of HBV DNA become incorporated into the hepatocyte DNA and trigger malignant growth. There is there is a 20x increase in the risk of development primary hepatocellular carcinoma and HBV carriers as compared to non-carriers.
सिरोसिस भी होती है इसमें लेवर की। इन्फेक्शन विद HBV कैन रिजल्ट इन परमानेंट लेवर स्कारिंग एंड लॉस ऑफ हेपेटोसाइट्स। अब इसके लिए लैब डायग्नोसिस क्या है, हम इसको कैसे लैब में डायग्नोस करते हैं। मेनी एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज आर सैम्पलर देन दे सीम एज फॉलो। HBsAg, हम इसमें देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ HBsAg ऑलवेज मीन देयर इज लाइव वायरस एंड इन्फेक्शन either acute, chronic, or carrier. When anti-HBsAg develop, HBsAg disappear and patient is protected and immune. HBsAg is equal to disease, chronic or acute. Anti-HBsAg immune, cure, no active disease. HBCAG antibodies to HBCAG are not protective, but we can use them to understand how long the infection has been ongoing. With acute illness, we will see IgM anti-HBCAG. With chronic or resolving infection, IgG anti-HBCAG will develop. IgM एंटी HBCAG न्यू इन्फेक्शन में होता है। IgG एंटी HBCAG ओल्ड इन्फेक्शन में पाया जाता है। HBeAg द प्रेजेंस ऑफ HBeAg EAG, the presence of HBeAg connotes a high infectivity and active disease. Presence of anti-HBeAg suggests lower infectivity. HBeAg high infectivity virus going wild. A बी में क्या होता है, एंटी HBeAg, इसमें लो इन्फेक्टिविटी होती है। इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।